Uttar Pradesh's Sambhal remains on the boil. Samajwadi Party MP Zia Rahman is in the eye of a storm, with the cops accusing him of inciting the rioters to run amok just days before the violence. Meanwhile, over 25 people have been arrested so far. Here is a detailed report. After the deadly clashes over the Masjid survey on Sunday, peace is returning to Sambhal. The probe into the violence that left 4 dead reveals alleged plan to instigate trouble in the area. CCTV images have emerged that show masked men allegedly firing at the cops. India Today has accessed the FIR that names SP MP Ziaur Rahman Barq as a key accused for inciting the crowds. Adding to the Sambhal MP's troubles, a video from November 22nd has surfaced, in which he's seen tearing the administration. इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक. The FIR accessed by India Today says SP MP Barq allegedly incited people 2 days before the violence. SP MLA Iqbal Mahmood's son Sohail Iqbal is the second accused in the FIR. He allegedly instigated the crowd on the day violence broke out. The FIR claims the mob fired at the police. They broke CCTV cameras and snatched bullets from the police. The mob allegedly looted tear gas shells and set police vehicles on fire. MLA Iqbal Mahmood and his son denied the charges. मैदान में कोई भीड़ नहीं आई. वहां पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं. वहां पर आप देख सकते हैं, वो फुटेज ली जा सकती है. वो पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं. वहां कोई भीड़ नहीं आई. वहां मेरा जो है सारी फुटेज वहां होगी कि मैं अंदर घर में किस वक्त गया, किस वक्त नहीं गया, वो सारी फुटेज उसके अंदर होगी. और अगर इसके अलावा मैं भीड़ में गया होता, नीचे भी होता, तो नीचे की वीडियो होती, क्योंकि वहां मीडिया भी थी, वहां ड्रोन पुलिस के चल रहे थे, वहां पे कैमरे भी चल रहे थे पुलिस के, सब चीजें चल रही थी. कहीं पे भी ये साबित नहीं कर सकता कोई भी मुझे कि मैं वहां पर मौजूद था. मैं समझता हूँ कि उसका कहीं पर भी कोई रोल नहीं है. वहाँ पर अगर अपना कैमरा टटोलें, देखें, तो कहीं उसकी प्रेजेंस नहीं मिलेगी. ना बोलते हुए, ना कहते हुए, ना मौजूदगी में मिलेगी. वो निर्दोष है और ये हम साबित करेंगे. The police are scanning videos of the violence to nab the rioters. अभी तो डीएम साहब का ऑलरेडी आदेश है यहाँ पे. अभी तो शांति व्यवस्था वापस नॉर्मलसी में आ रही है. उनका अननेसेसरली आके यहाँ पे लोग से कोई चीज़ से दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए उन लोग से अपील कर देंगे. लेकिन हम लोग सभी जो मौजूद अधिकारी लोग हैं, सभी लोग को शांति व्यवस्था का कायम रखा है. लोग से अपील भी किया है. हम इन लोग का सबका इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको सबको सगे करेंगे. उन लोग से अपील भी करूँगा, उनका आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम इस पर कानूनी प्रक्रिया में नियम अनुसार विधिक कार्रवाई हम करेंगे. किसी की निर्दोष का कुछ नहीं करेंगे. The clashes have triggered a political blame game. ये कांग्रेस ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनेगा, और आप देखें पीछे मुड़ करके जहांगीरपुर में भी घटना घटी थी इसी तरह. आप देखें कानपुर इसी ढंग की घटना घटी थी. सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी. सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं. Congress leaders from Sambhal met Rahul Gandhi to brief him about the incident. The leader of opposition could visit the riot-hit Sambhal in the coming days. While the situation is turning to normalcy, internet continues to be suspended and the probe has begun. The administration, using all the CDRs, the CCTV footages, the drone footages, now trying to identify all the culprits who were part of the mob that led to the violence near the Shahi Masjid. In Sambhal, with Abhinav Mathur, Jagannath, Himanshu Mishra, this is Ashutosh Mishra for India Today.
Ashutosh, tracking that big story from ground zero. Ashutosh, the investigations in this matter continue. Meanwhile, the Yogi Adityanath government has made it clear that you destroy, you were the one to carry out the arson, you will pay. How is the government now going to go about this? बुलाया साहब ने जी well can you repeat the questions, Neha? Yes, I was asking you that the government intends to get the rioters to pay now, saying that you were the one to indulge in arson, you destroyed public property, and we're going to come after you. You'll be paying for this loss. Well, that's a part of the proceeding, and UP has a law for it, and this all started during, if you remember, the CAA protest, and the notices will be issued. Those who have been identified, still many people will be identified. We have access to certain images that are released by the sources from the administration that the administration and the investigative agencies are trying to identify almost every person that were involved in and were part of the violent mob, and then once after the notices are served, the proceedings of the recovery will begin here in Sambhal. All right, and what about the situation as of now? We understand the life is now limping back to normalcy in Sambhal. What more can you tell us? Well, it's absolutely normal. It's absolutely normal. In fact, we are headed to speak to the senior officials. The internet is suspended. Shops have started gradually opening up. In many of these areas, the vehicular movement is back on track. School, colleges are open. Of course, there is a sense of tension and perhaps administration is being a little more conscious. Street of Friday, Juma Namaz. But for now, the situation has come to the normalcy.